अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 25th समिट मीटिंग हुई ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स इन बीज इन इन चाइना, इस समिट के ऊपर हमने एक प्रिलिमिनरी ओपिनियन दिया था व्हेन दिस समिट वाज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस एंड वी न्यू हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, बट वी वर येट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट समिट। बट आज के इस एपिसोड में हम उसी के ऊपर जो है वो फर्दर एनालिसिस बिल्ड करेंगे, और खासकर when the declaration has been issued, when the statements are issued, the agreements are signed, documents are signed, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो स्कॉलरली लिटरेचर सामने आया है उसकी बुनियाद पे अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो आज की जो एपिसोड है उसके लिए ये जो एपिसोड है दिस इज डेडिकेटेड टू दिस काइंड ऑफ इन डिटेल एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 25th head of the state summit that took place in China. Before I go on to explain this topic in details, आपको स्क्रीन पे नजर होगा we have different programs for the CSS examination जो कि current affairs, Pakistan affairs as well as political science जो है उस हवाले से हैं. So you can get more information on the given numbers or by approaching our social media accounts जिनकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ है चाइना के अंदर, जिसमें मैंने कहा 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये 2 दिन का समिट था, जिसमें 20 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उनके सरबराहान ने शिरकत की है. उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, और उसके बाद हमने कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पोलिटिकल लीडरशिप है वो भी वहाँ पर मौजूद थी. बिसाइड्स दैट प्रेजिडेंट पुतिन फ्राम रशिया, नरेंद्र मोदी फ्राम इंडिया, इसी तरीके से नॉर्थ कोरियन लीडर और बहुत सारे ममालिक के जो सरबराहान हैं वो इस समिट के अंदर मौजूद थे, और जिसके बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से दिस समिट इज़ काइंड ऑफ एन इवेंट जिसपे शी जिनपिंग जो है, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ग्लोबल जो है वो एक शो काज किया अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इनडायरेक्ट और वेल्ड मैसेजेस दिए अमेरिकन को अबाउट द राइजिंग potential of the global south cooperation as well as the rising leadership role of China in an emerging global order. मतलब आज की एपिसोड में अगर बात करें नाजरीन, तो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं इसकी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इस समिट के दौरान कोई 20 के करीब जो है वो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं. डिफरेंट जो है वो काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर नई बॉडीज बनाई गई है, जैसे एंटी ड्रग बॉडी बनाई गई है, सेंटर टूवर्ड्स काउंटरिंग डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर एक सेंटर बनाया गया है. इस तरह के कोई 20 के करीब डिफरेंट एग्रीमेंट जो है वो हुए हैं इसके दौरान. कुछ उसके चार्टर में चेंजेस की गई हैं, एक डायलॉग पार्टनर जो है वो ऐड किया गया है एक स्टेट को. तो इस तरह के बहुत सारे मामला जो हैं उनके ऊपर 20 के करीब डिफरेंट जो है वो एग्रीमेंट्स हुए हैं. बिसाइड्स दैट, उन एग्रीमेंट्स के अलावा एट द एंड ऑफ दिस समिट एक चार्टर जो है, एक काइंड ऑफ चार्टर इशू किया गया, एक डिक्लेरेशन इशू की गई बाय द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन which has been classified into 5 different categories. 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से अलग है, इकोनॉमिक्स के हवाले से अलग है, कल्चरल और उस हवाले से अलग है. तो 5 डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर 5 मामला के ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस की, विच इज अ डिटेल्ड डिक्लेरेशन एंड वेरी वेरी डीप एज वेल एज काइंड ऑफ कम्प्रीहेंसिव डिक्लेरेशन जो है इसको हम कह सकते हैं जाके. तो नाज़रीन, बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन, बेस्ड ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर देयर, जिस तरीके से मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन की गई, जिस तरह की स्पीचेस की तमाम जो सरबराहान थे उन्होंने, इंक्लूडिंग द टॉप लीडर्स ऑफ रशिया, चाइना, पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, उन तमाम बुनियादों पे हम इसको अगर एनालाइज करें तो ये जो समिट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की रीडिंग हमें देता है. और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो समिट है दिस इज अपेरेंटली सीम टू बी a kind of notification to the United States that look, you have been trying to isolate China, you've been trying to contain China for more than a decade, you have been trying to isolate Russia for years and particularly since 2022, and you have been trying to push India towards the corner, but look, we are together and most of these states are together, or through this declaration, through this kind of SCO summit, ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई दैट ये जो साउथ के लीडर्स हैं दे कैन इंटीग्रेट इन द वेक ऑफ कॉमन चैलेंजेस जस्ट लाइक द वेस्टर्न लीडर्स गेट यूनाइटेड बिहाइंड व्हेनेवर देयर इज अ चैलेंज टू देम. जैसे यूक्रेन वॉर हुई उसके बाद में यूरोपियन की देखी, इंटीग्रेशन देखी, तो ग्लोबल साउथ जो है दैट कैन आल्सो हैज द पोटेंशियल एंड द विल टू स्टे इंटीग्रेटेड इन द वेक ऑफ इमर्जिंग चैलेंजेस दैट आर मोस्टली कॉमन टू ऑल ऑफ देम.
बिसाइड्स दैट नाज़रीन अगर इसको तो इसको ग्लोबल ऑर्डर के सेंस में भी देख सकते हैं, बिकॉज ये जो समिट था दिस इज आई पर्सनली बिलीव is the announcement of a new emerging world order which is that of multipolarity. ये मल्टीपोलरिटी का जो आर्गुमेंट है ये ना सिर्फ उनकी डिक्लेरेशन में मौजूद है जो अनाउंस की गई एससीओ की तरफ से, बल्कि इसमें कहा गया फेयर हो और वो ऐसा ऑर्डर हो जिसमें सबके जो रिप्रेजेंटेशन हो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और मल्टीपोलर होना चाहिए. और ये जो एक्चुअली आर्गुमेंट था, दिस इज अ क्लियर आर्गुमेंट दैट ग्लोबल साउथ इज अनसेटिस्फाइड with the Western and American dominated so-called liberal world order or a unipolar world order, and therefore this is a charter of demands, but not just the demands, a resolve that we will not accept that old order, and that's very very important one. So एक सेंस में जो वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी हद तक हम कह सकते हैं दैट हैज बीन मेड बाय this SCO summit, and there is no better time than this one because Trump is president and he is helping the global south get together and integrated जैसे उन्होंने इंडिया के साथ किया है. Another major part of this summit was the Chinese president's speech. हमने देखा कि चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे he was relatively more vocal against the United States, not by the choice of the word that he used but by the kind of message that he delivered. उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, नाम नहीं लिया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट का, बट उनका जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है और कोल्ड वॉर टूल्स हैं वो ड्राइव कर रहे हैं आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को, विच शुड नॉट हैव बीन द केस. उनका कहने का मकसद ये था दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज लिविंग इन द ओल्ड टाइम्स एंड इट इज अ पावर दैट इज डिक्लाइनिंग पावर. It has lost its shine, it has lost its credence, it is short of tools in fact to manage the new realities of the 21st century, and China with limited resources compared to the United States is still powerful enough to manage the new world order. So in that context cold world का मतलब ये था कि you are trying to see the world in a bipolar setting. You are seeing China as a threat, but it's not just China, it's Russia, it's Brazil, it's Saudi Arabia, it's middle powers, it's India. जो emerging powers हैं उनकी जो presence है they must be given due share which the Western liberal order has not historically and particularly in the last few years. So एक context में जो कह सकते हैं कि एक free world versus the south world, that's how the world has been divided. But two blocks को हम bipolar नहीं कहते, two states के अंदर polarity को हम bipolarity कहते हैं. Therefore इस केस में हम कह सकते हैं that this is the official announcement about the transition from a unipolarity towards a multipolarity. That unipolarity was vested in the west and global north, and the multipolarity is actually the rise of multiple powers not from the north but from the south as such. एक और important aspect of this meeting was the gestures that were given. देखा कि नरेंद्र मोदी साहब जो थे he spent quite a lot of time talking to President Putin, और ये जो पुतिन के साथ मुलाकात है, ये इनका जो बातें हैं, मीटिंग भी हुई अलग से, ये एक डायरेक्ट स्नब था यूनाइटेड स्टेट्स को, बिकॉज हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अमेरिकन के ऊपर जो सैंक्शन लगा, इंडिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाई हैं 50% टैरिफ्स पे लगाया है, उसका जो ऑफिशियल रीजन साइट किया उन्होंने वो ये है कि इंडिया बायज द रशियन ऑयल एंड इंडिया सपोर्ट्स द वॉर मशीनरी इन द यूक्रेन वॉर. और उसके बाद प्रेसिडेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कोजी अप होना is a clear indication that even India, which is not the top world power, is willing to defy the United States. This is yet another example of the diminishing influence and power of the United States and the growing power of the states in the global south and the emergence of a growing multipolarity at global stage. So United States has yet to concede that it is no longer the sole superpower that could dominate and dictate the states on the matters of security, economy, or trade. There is defiance, and India is not the only one, but the most recent one. Another aspect is that India-China relationship. आज हम ये जानते हैं कि ये जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज हमने देखा कि जो इंडिया है इट वाज कंसिडर्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स as the proxy of the United States against China, and India was very open to that idea. Indian officials, Indian think tanks, media was accepting this idea that there is nothing wrong in cozying up to the United States to counter China, because it would help two things. One, it will help strengthen India internally, and it would help India counter the external threat of China.
बट नाउ दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग अ स्लिप टू इंडिया, और उसके बाद हम जानते हैं कि जो इंडिया का चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन था, दैट वाज वेरी एविडेंट. Gradually, Indians are realizing that the conflict with China is not in their interest, because alone India would not be able to compete with China, and US is not a reliable partner to compete with China. Therefore, the best way to deal with China is to make peace with China, and particularly when they know that China cannot afford any military adventure, at least not for now, on their borders. So India China के दरमियान में जो था है, that is primarily attributed to the Trump's policy of tariffs, particularly on India, but also on China. Another importance is the proposal put forward in the summit by the Chinese president of having an SCO development bank. This is a clear yet another indication that the global South states led by the Chinese are willing to reduce their dependence on the Western support and the dependence on the Western institutions like IMF, World Bank, and most importantly, reducing the dependence on the Western countries for the global transactions of money. Another major aspect of this summit was the emphasis on counter terrorism. जैसा मैंने बात की कि इसकी डिक्लेरेशन के अंदर भी टेररिज्म को कंडेम किया गया, इसकी स्टेटमेंट्स के अंदर भी कंडेम किया गया, और नाम लिए गए टेररिस्ट इंसिडेंट्स के, जैसे पहलगाम में इंडिया में हुआ हमला हुआ, उसके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उसके बाद इस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जो हमले हुए, चाहे जाफर एक्सप्रेस हो या खुजदार के अंदर बस के ऊपर अटैक्स हो, उनको नेम लेकर कहा गया कि दे आर अ थ्रेट एंड दे नीड टू बी काउंटेड. So, in that context, when the Western world has long forgotten the terrorism as a threat because it no longer poses a threat to them, these global South states and the Eurasian region still faces this menace, and therefore the pledge from the SCO is a clear indication that global South has its own peculiar problems for which they should not depend on the Western allies. Rather, there has to be a regional solution to a regional problem. Another important aspect is the expansion of the SCO. हमने कहा कि SCO जब establish की गई थी तो primarily it was a security organization, but over the years it has expanded itself. But this year the scope of SCO has significantly expanded, और SCO ने अपने आप को, जिस मैंने कहा कि SCO डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है, एंटी ड्रग के हवाले से बात की जा रही है, कल्चर के हवाले से कोलैबोरेशन की बात की गई है, SCO की यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की गई है. तो इस तरह के जो मामला हैं, तो SCO ने अपने आप को काफ़ी एक्सपेंड किया है, फ्रॉम सिक्योरिटी टू पॉलिटिकल टू इकोनॉमी and to other socio-economic issues. It has expanded in its scope, and this summit had contributed towards that. Last but not the least, Nazreen, the SCO summit is a clear indication that when the global north has abandoned multilateral diplomatic approaches, it has abandoned not just the multilateral institutions but multilateral diplomacy. Global south is willing to continue with that, and global south led by China is unwilling to act solely, or they are unwilling to act unilaterally on any matter that concerns everybody, and therefore there has to be a collective approach, there has to be a multilateral approach to deal with the common challenges by the states. चाहे आप ally हैं या नहीं है, जैसे इंडिया चाइना हैज rivalry, पाकिस्तान इंडिया हैज a rivalry, but we may have rivalries ourselves, but for common challenges we need to have a common stand, unlike United States and the Europeans, who have abandoned the idea of, and primarily United States under Trump has abandoned the idea of multilateral approach to deal with the international issues and issues that are common to everyone. So to conclude, Nazreen, हम कह सकते हैं that this SCO summit is a game changer in the 21st century geopolitics, and it is for me a moment that I can term as the kind of Bretton Woods system, or the big three meeting that took place after World War II, and this summit is likely to be a significant turnaround in the history of the 21st century, mainly because of the fact that global South states are willing to have open denouncing of the sole hegemon that governed the world for so many decades. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.